Namaskar, Manoj sir. Namaskar. Good evening and a warm welcome, everyone, to this May 2022 edition of Swar Shravan. And we are coming to you live from the headquarters of Swar School of Music in Denver, Colorado. Happy Mother's Day to all moms and grandmothers listening, and a special shout out to Manojji's mother in Chembur, Mumbai. She is probably listening to us in the early hours of the morning in India. And Auntie ji, our pranams and best wishes on behalf of all Swarra students. A big thank you for giving us Manoj sir. Uh, you are the reason why all of us are able to learn and enjoy the bliss of our classical music. So, happy Mother's Day, Auntie ji, once again, and thank you. And with that, over to you, Manoj sir. So, sir, आज स्वर श्रवण के इस मंच पर कौन आर्टिस्ट पधार रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए. Ji. साई राम. Thank you so much, Seshadri ji, and namaskar to everyone on this 21st session of Swar Shravan. And just as Seshadri ji did, I would also like to wish my mom and all the moms and grandmoms a very, very, very happy Mother's Day. And so, interestingly, there was a message that came to me today morning from a very dear friend of mine, and he said, "Can we have a female maestro today?" And last year, on the second Sunday of May, which was May 9th, which obviously was a Mother's Day too, on that day also we had a female maestro in Vidushi N. Rajamji, the violinist. And even then, and also today, when we decided about the instrumental artist for the Swar Shravan session, I can tell you for sure that I never had this in mind that today was Mother's Day, and I just randomly picked an artist who just happened to be a female maestro, and that's exactly what has happened today also. Um, so, yes, as per my friend's wish who sent me the message today morning, it is going to be a female maestro today. And someone whom I feel we need to hear a lot. She's no more with us. Sadly, she passed away about 7.5 years back at a very young age of 68. A true, true legend, not only well versed with classical music, but I can almost say uh, with lot of surety that in film music since 1964, if at all there was any sarod played, that was this artist. So any film song that you hear sarod in, it is this artist. So that has been her contribution. And of course, to go with her amazingly strong classical music background. Whom are we talking about? None other than late Vidushi Zarine Daruwala, or also known as Zarine Sharma. Yes, Vidushi Zarine Sharma ji. It was really a shock for me because growing up, I have heard her so many times on radio, and also was also fortunate to hear her live once. And for me, we had the likes of Ustad Ali Akbar Khan Sahab, Ustad Amjad Ali Khan Sahab, all those maestros in Sarod. But somehow, Zareen ji just
captured my mind, the way she played sarod. And when I play her recordings, I bet that you will agree with me. So, Vidushi Zarine Sharma ji. Of course, we will talk about her music as we go along. But let's start today's session with one of the most popular rags that everyone knows about, Rag Malkaun's. Yes. So this is Rag Malkaun's, in which Zarinji will be presenting alap and a little bit of jhala, and followed by a gat in Madhyalay Teen Tal 16 beat cycle. So here we go. Vidushi Zarine Sharma ji, Rag Malkaun's. Kind. 01 Rag Malk. Delete. File info. 01 Rag Malkaun. Select slash back button. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
क्या बात है. हाँ. हूँ तो जागरूक हूँ. हाँ मुझे हाँ. हाँ.
Wow. Wasn't that exhilarating stuff, isn't it? This is so amazing. Selected. 01 And Rob Malcolms. MP3. Speech off. one thing that I forgot to mention at the beginning of this session was that this instrument is such, and especially the way Zarine ji plays, uh, the listeners have to be absolutely attentive because the intricacies that she plays, especially when she's playing in the lower octave, and if you notice, she almost modulates like a singer does, you know. Uh, some points, she would go a little bit low. At some points, she would really uh, pluck it really strong. So that sort of modulation and the gaiki ang uh, was so unique in her playing. And when we will hear her interview, she mentions about that particular aspect of her playing. And to me, that's what stood out in her playing, and somehow it really attracted my listening, sarod, and the way she would play. So it was just so fascinating and so much full of nuances and a couple of novelties. Now, when she was playing the jhala before the tabla started, I don't know if any one of you noticed, but she actually used a little bit of Western music. And that's what we are going to hear in the next composition. In fact, in the next composition, we start with jhala, and in that, you will hear a very distinct usage of Western style of playing that she incorporates in the jhala. So it is such a unique thing. I have not heard any sarod player do that. No one. It is such a unique style. And so let's listen to this rag Janasammohini. So Janasammohini is very similar to a more popular rag, Kalavati. So in Kalavati we have sa ga pa dha ni dha sa ni dha pa ga ni dha pa ga dha pa ga ni dha sa. So that is Kalavati. So no re and no ma in Kalavati, but in Janasammohini we use re. Sa ga re ga pa dha ni dha pa ga dha pa re ga pa re ni dha pa dha ni dha da ga re sa. It's also called Rishabh Ranjani, but Janasammohini is a more popular name. So no ma, of course, but with the addition of re in Kalavati, this becomes Janasammohini. And let's listen to this from Zarine ji, in which we will hear a Madhyalaya composition in Rupak Tal. And the other feature of her playing is her amazing control and the calculation that she has for rhythm. She would arrive at some amazingly complicated tihais with such ease that you would just be totally awestruck, right? It is just so amazing. Now you will hear that in this composition. So let's listen to this Rag Janasammohini in Madhyalaya Rupak Tal. Vidushi Zarine Sharma ji. Speech on. File in 0 to Rag Janasammohini. Select speech off. Now just listen to this Western. I'll exactly tell you when it comes.
There you go. आहा, क्या बात. आहा. तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन. क्या बात. आहा.
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. Selected. 0 to rock. Speech off. It's so amazing, isn't it? It was such a melodious and a very mellifluous composition. And uh, the best part about the Western style that she incorporates into her playing is she just uses it like a, like just if I may give the analogy of cooking, you just give a little bit of tadka, just that extra, just a little bit of tadka, by which the dal just tastes so much better, right? So that's what she does when she uses Western style. She just plays it for a few seconds, 15, 20, 25 seconds, and then she comes back to the original style without overdoing it. So that is the best part. So it was just so amazing to listen to. So the next one is an afternoon melody, rag God Sarang. So in this we will hear a Vilambit Gat, a short one in Teen Tal, followed by a Drut Gat in the same Tal, Teen Tal, 16 beat cycle. God Sarang, it's a very phrase oriented rag, meaning you need to keep one particular phrase constantly repeating all the time, and that phrase is Sagare Maga. So you keep repeating this phrase over and over again. Pa pa maga mare gare maga. Pada pa sa sa re sa dha pa pa sa pa ma ga re ma ga pa re sa ga re ma ga. So this is Gaur Sarang. So let's listen to these two compositions from Zarinji, Rag Gaur Sarang. Speech on. 503 Rock God Sarong. MP. Select slash back up button. Dha, dhin, dhin, dha, dha. Ah. Aha.
Uh-huh. Ah. There, the Western touch. Ah ha ha ha. Wow. Wow. Selected. 03 Rag God Sarong. Speech off. That was Rag Gaud Sarang, in which again we heard the Western tadka, the jhala. So now the interview. So she of course talks about her initial years in training and her gurus about whom she mentions with so much respect. And then there was one incident that she basically, as I said, any sarod that you hear in Hindi film industry is Vidushi Zarine Sharma ji. She has played it, and she has worked with music directors. You name them music director, and she has worked with them. So in this interview, she talks about an incident that she experienced with Ravindra Jain Sahab, and in which we can actually see her humility and her constant quest to learn. Always wanting to learn, always looking or listening to any kind of music with an open eye and ear to learn. So that's what we will hear in this interview. So let's do this. Speech on. 04 interview. MP. Select slash. Back. मेरा button. जन्म मुंबई में हुआ Speech off. 1946 में, और 4 साल की जब मैं थी तो सबसे पहले मैंने हारमोनियम सीखा बजाना। फिर 6 साल की उम्र से गाना सीखा। फिर जब मैं 10 साल की थी तब से मैंने सरोद सीखना शुरू किया, और तब से बहुत रियाज़ किया, तालीम ली। मेरे गुरुओं का नाम है पंडित मनोहर चिमोटे, जिनसे हारमोनियम सीखा, पंडित पी मधुकर, जिनसे हारमोनियम सीखा, पंडित भीष्मदेव वेदी, जिनसे हारमोनियम सीखा, पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले, जिनसे गाना सीखा, पंडित वीजी जो सरोद सीखा। और सरोद की सही तालीम जब मैंने सरोद सारेगामा सीखना शुरू किया पंडित हरिपद घोष जी से, और फिर पंडित वीजी जो, डॉक्टर SCR भट्ट और डॉक्टर SN रत्नजनकर जी से तालीम ली। और हाँ जी, और क्योंकि मैंने गाना 10 साल सीखा था, इसलिए मेरे बजाने में थोड़ी गायकी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। हाँ। तो ये किस तरह के परिवार में आपका जन्म हुआ था, और कैसे क्योंकि सरोद में और सरोद
अभी क्या कहिए, गायकी को छोड़कर इंस्ट्रूमेंट्स में कम महिलाएं देखने को मिलती है, सरोद में तो बिल्कुल ही कम देखने को मिलती। तो कैसा परिवार था जिसमें आपको इसके लिए प्रोत्साहन मिला? मैं पारसी फैमिली में बॉर्न हूँ। मेरे डैडी सोराब जी दिनशा जी दारू वाला, उनको आर्टिस्ट बनना था, पर मेरे ग्रैंडफादर पुराने ख्यालात के, उन्होंने बोला पारसी लोग ज़्यादा वेस्टर्नाइज होते हैं, बोले वेस्टर्न म्यूज़िक सीखो, वायलिन चाहिए तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात मत करो। तो डैडी को तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से लगाव था, तो नहीं सीखने दिया। मेरी मम्मी पियानो बजाती थी, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, ऐसे ही। तो जब मैं 6 साल की थी तब मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया सुर सिंगार संसद में, हारमोनियम का सोलो का। उसी दिन रात को पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अली अकबर खान साहब की डुएट थी सितार सरोद की। तो डैडी ने सोचा चलो इसको देखते हैं, कोई इनमें से 2 साज में से इसको कुछ पसंद आता है क्या। तो रात को बोले अभी ये आइटम सुनने का है। तो जब सुना तो डैडी ने पूछा ये दोनों में से तुमको कौन सा अच्छा लगता है, अगर तुमको सीखने के लिए कहे तो 6 साल की उम्र थी, सितार सरोद इतना मुझे मालूम तो नहीं था। मैंने कहा ये जो आ रहा है ना, इन सरोद ऐसा गोद में रहता है ना, अगर आपको सिखाना है तो मुझे ये सिखाइए। तो क्यों कहा? क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा, उसका साउंड। खान साहब अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, खान साहब ने बजाया। तो खान साहब बॉल हेडेड थे ना, अली अकबर खान साहब, तो हमारे पारसी में बॉल हेडेड को टालकी बोलते हैं। मैंने बोला टालकी वाला अंकल છે ને ये जो वगैरह चाहिए मैंने सीखो, गुजराती में बोला। तो डैडी ने 2-3 बार कंफर्म किया, 2-3 बार मैंने वही बात की। रविंद्र जैन जी के साथ बजाया, सौदागर का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, गाने तो मैंने नहीं बजाए, इन्होंने बजाया, मेरे हस्बैंड ने बजाया। तो सौदागर के लिए मुझे बैकग्राउंड के लिए बोला, तो पहचान करा ये जरीन है, ये दादा है, तो अच्छा लगा। तो रविंद्र जैन बहुत काबिल इंसान है। अमिताभ बच्चन? हाँ, अमिताभ बच्चन नूतन वाली, तो बहुत काबिल इंसान है। मतलब उनको काफ़ी सीखे हुए हैं, उनको क्लासिकल का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, फोक तो इनका ज़बरदस्त है। तो ऐसा बजाया तो उनको भी अच्छा लगा मेरा बजाना। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उनके साथ बजाने का, तो चलता ही रहा। तो हमने सौदागर से उनके साथ बजाना शुरू किया, तो बहुत बहुत बजाया। एक बार एक रिकॉर्डिंग थी, तो गाना ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद सब पैकअप हो गए, तो अंदर से दादा, रविंद्र जैन को हम लोग दादा बोलते हैं, तो दादा ने बोला जरीन जी आप मत पैकअप कीजिए, आपका थोड़ा एडलिप पोर्शन बाकी है, लेना है। एडलिप पोर्शन मतलब आलाप जिसमें रिदम नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है। तो बाकी लोग सब बैठे थे, बोले इसको क्यों रोक के रखा, क्या इससे अलग बजवाने का है, थोड़ा एंथुसियाज्म होती है सबको। तो बैठे थे कुछ लोग। अभी क्या होता, वो मॉनिटर रूम से दादा के आना, वो खुद जो बोलेंगे वही बजाने का। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र है। तो वो गा के जो बताते थे, तो हेडफोन में तो मुझे सुनने में आ रहा था, पर उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम में भी स्पीकर ऑन रखा था, तो बाकी जो लोग बैठे थे वो भी सुन रहे थे अंदर से दादा क्या गा रहे हैं। तो बजा गाया, अच्छा टेक करते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसा बोला ऐसा मैंने बजाया। जो सुन रहे थे उनको लगा कमाल है, सुना और फट करके बजा लिया। अच्छा था। दादा बोले ख़त्म होने, एक और लेंगे। मैंने कहा अच्छा, अब ज़रा रुके, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब जो पहली बार बोला वो दूसरे बार अलग था। ऐसा उन्होंने 16 बार मेरे से बजवाया, और 16 बार अलग अलग, जो पहले था वो अलग, दूसरे में नहीं, दूसरा था तीसरे में नहीं, ऐसा करके 16 बार मेरे से बजवाया। जो बैठे थे लोग परेशान हो गए, ये हर बार सही बजाती है, फिर क्यों ओके नहीं किया उन्होंने। तो 16 बार जब बजाया तो बोला अच्छा ठीक है, ओके पैकअप, ठीक है हो गया। तो कुछ लोग आए मेरे पास, बोले आप इरिटेट नहीं हो गए। मैंने कहा नहीं, क्यों, आप पहले से ही बहुत सही बजाती थी, 16 बार आपसे बजवाया, तो आपको ऐसा लगा नहीं, गुस्सा नहीं आया कि क्यों इतना बजवाते। मैंने कहा नहीं, आप ये एंगल में देखते, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे 16 बार अलग अलग चीज़ सीखने को मिली, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बोलते हैं आप ये नज़र से देखते हैं जब बजाते हैं, तो हाँ मैंने कहा मैं ये नज़र से देखती हूँ, मुझे सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी बातें, जो छोटी छोटी नज़ाकत की बातें होती है वो इतना आसानी से दादा बोलते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो फ़ायदा ही हुआ उससे। चलो अच्छा है। और ये सब करते हुए फिल्मों के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक रिहर्सल से दूसरी रिकॉर्डिंग, ये सब करते हुए जो आपको पैसे मिल रहे थे वो कितने थे? शुरू जब किया होगा तब, और
देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में क्या कहीं भी आप बजाएंगे तो पैसे तो आपको मिलेंगे, पर पैसे के अलावा आपकी नज़र सीखने पे रखिए, कितना कुछ सीखने को मिलता है। शंकर जयकिशन के यहाँ जाएंगे, उनका अलग अंदाज, ओपी नैयर के यहाँ जाएंगे, उनका अलग अंदाज, रविंद्र जैन जी के यहाँ जाएंगे, उनका अलग अंदाज। पैसे से भी ज़्यादा ये जो आपको सीखने को मिलता है, अगर आपकी नज़र है सीखने की तो सबकी होती है ऐसा मैं नहीं मानती, वो बेमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मतलब कुल मिलाकर जो भी पैसे मिले, बेशक आप आज़ाद हैं कि आप हमें बताएं या ना बताएं, हाँ। लेकिन जिंदगी खुश गुजरी। क्यों, क्या उसमें बुराई है? हमारे तो फैमिली जो है वो तो वेरी वेल टू डू है। ये तो मेरी एम्बिशियस थी, क्योंकि डैडी को सीखने को नहीं मिला, तो डैडी ने जब देखा कि इसके अंदर थोड़ा संगीत का कुछ लगाव है, तो उन्होंने बोला अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो मेरे पिताजी ने रोका, मेरी बेटी को तो कोई नहीं रोकेगा, तो इसको तो मैं आर्टिस्ट बना के ही रहूँगा। तो वो तो फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड तो वेरी वेल टू डू, तो मैं बजाती कमाती नहीं कमाती कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। पैसे से ज़्यादा मैं सीखने को जो मिला वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं जब भी जाती हूँ, आज भी मैं किसी भी कलाकार को सुनती हूँ प्रोग्राम में या कहीं भी, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ वो कैसे बजाता है, कैसे गाता है, क्या सीखने वाली चीज़ है, वो ले लो। वो आप नज़र रखोगे तो आपको अपने संगीत में बहुत स्कोप और मिल जाता है बजाने का। Speech on. Selected. 0. Speech off. See, some of these things, when you listen, you just like automatically you tear up, isn't it? Like, just so touching and so inspiring to hear all these things from these great artists. And sometimes, especially in today's world, like, because of YouTube and all these things and karaoke and all, nothing against those things at all, but sometimes when people think that they are expert singers without unfortunately really going through the drills and the grinds of the learning process, and then when you listen to maestros like Vidushi Zarine Sharma ji, क्या है हम लोगों की औकात उनके सामने. So, yeah, it was just so touching to listen to the way she described her entire journey. So, anyway, so this next one is a tappa. Now, tappa is so difficult to play on an instrument, right? Even singing wise, it's just so difficult because you're constantly like running over swars, so to say, like so it's constant, like there's no halting on any swar, and to produce that on an instrument like sarod, truly amazing. So in fact, the rag that I just hummed a little bit, rag kafi, that's the rag that you're going to hear from her. Tappa in rag kafi, set to adha teen tal, 16 beats, a little different from teen tal, but let's listen to this. Rag kafi, tappa from Vidushi Zarine Sharma ji. Speech on. File 05 Rag Coffee Tappa. Select / back speech off. Dha, dhin, dha, dha, tin, ta, ta, dhin, dha, dha, dhin.
Ah. Wow. So that was Rag Kafi Tappa that we heard just now. To conclude, as always, with Rag Mishra Bhairavi Gat in Teen Tal that we will hear along. So, I have always noticed that whenever I have heard Zarine ji play Bhairavi, she would always incorporate other rags, almost making it like a ragamala, like a series of rags, but keeping Bhairavi as the base rag. So, this is one such composition. Of course, it's a very long one, but we have obviously edited it. And so, let's listen to this Rag Mishra Bhairavi in Tal, Teen Tal. Speech on. File in 06 Rag Mishra Bhairavi. Select / speech off. Ah. Uh-huh. 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 The Western.
let's bow down to this legendary artist who sadly is no more with us. And like I said, at a very young age of 68, she left us. In fact, the interview that we heard just now, at the end of the interview, and in fact, I would urge everybody to search for her on YouTube and hear not just this interview but listen to her pieces. So, at the end of this interview, the interviewer actually mentions that this interview was taken in June of 2014, and exactly 6 months later, in December 2014, she passed away because of intestinal failure. Uh, so, so let's really, listen to her. And, whenever in any film song you hear sarod, you know who's playing it. So let's really um, uh, pay respects to this legendary artist by listening to her more and more and more, and spreading the word about her and making people aware that there is this such an amazing legend who was sadly not as recognized as she ought to be. What an uh, amazing unplanned Mother's Day gift really that it turned out to be. So with this we conclude session number 21 of Swar Shravan. Hope all of you enjoyed this, and uh, if you have any suggestions or comments or feedback, do let us know. And also do let us know of artists about whom you would like to listen to. Of course, that we try to talk about artists who are not very commonly heard of. So in case if you have heard some artist and if you feel that the artist needs to be heard more, do let us know, and we'll be more than happy to present a session on that artist. So the next Swar Shravan session will be on the second Sunday of June, that is June 12th, session number 22, and that will be a male vocalist. So basically we have completed 7 cycles now. From next month we'll be starting cycle number 8. So until then, please stay safe and happy listening, and happy Mother's Day once again. Namaskar.